हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इंतहाई सिंपल और आसान सा है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि आज की मेरी वीडियो का कौन सा टॉपिक है। तो मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो है पोलिनेशन के हवाले से कि पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन डेफिनेशन: the transfer of pollen to a stigma ovule flower or plant to allow fertilization. उसके बाद आता है what is the simple definition of pollination. Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. The goal of every living organism, including plants, is to create offspring for the next generation. What is pollination called? Pollination by insects is called entomophily, and pollination by birds is called ornithophily. Pollination by vertebrates is known as zoophily. Abiotic agents: wind and water. Wind pollination is known as anemophily, and pollination by water is called hydrophily. उसके बाद देखिए what is the pollination definition and types. The process of transfer of pollen grains from another to stigma belonging to the same flower or different flowers is called pollination. The two types of pollination are self-pollination and cross-pollination. उसके बाद क्या है, what are the 4 steps of pollination? There are 4 primary steps of fertilization of plants: pollination, germination, penetration of the ovule, and fertilization. उसके बाद देखिए what is the process of pollination. Pollination is an essential part of plant reproduction. Pollen from a flower and others, the male part of the plant, rubs or drops onto a pollinator. The pollinator then takes this pollen to another flower where the pollen sticks to stigma. The fertilized flower later yields fruit and seeds. What is an example of pollination? Pollination के एग्जाम्पल क्या है कि bees provide a good example of the mutualism that exists between hymenopterans and angiosperm. Flowers provides bees with nectar and energy source, and pollen a source of protein. When bees go from flower to flower collecting pollen, they are also depositing pollen grains onto the flower, thus pollination them. उसके बाद रहेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी. तो why is pollination important? तो it is an essential ecological survival function. Without pollinators, the human race and all of Earth terrestrial ecosystems would not survive. Of the 1400 crop plants grown around the world, for example, those that produce all of our food and plant-based industrial products, almost 80% require pollination by animals. So, what is the pollination? For class 10, the pollination is the transfer of pollen grains from the another of one flower to the stigma of the same or another flower. It is said to be the first process of sexual fertilization in flowering plants. Pollen grains contain the male gamete and are present in the anthers of the flower. उसके बाद देखा what is self and cross pollination. The self-pollination occurs when the pollen from the another is deposited on the stigma of the same flower or another flower on the same plant. Cross-pollination is the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different individual of the same species. What are the two main names of pollination? तो दो नेम हैं इनके. तो एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन. तो व्हाट इज़ द पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द पिस्टल्स ऑफ अनदर फ्लावर. जो क्रॉस पोलिनेशन होगी इसमें एक ऐसी पोलिनेशन होगी जिसमें ये होगा कि वन मतलब एक फ्लावर से एक फूल से दूसरे फूल तक होता है जो क्रॉस पोलिनेशन होता है.
जो कि सेल्फ पोलिनेशन है, जो एक ही फूल में होता है। मतलब कि दरख्त चेंज होता है, मतलब दो फ्लावर फूल हो तो अलग अलग शाख जिन पे हो, तो उसके लिए होता है। तो ये था मेरा टॉपिक। आप सबको समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।